ओके, अपना 48 हो गया था ना, 49 पे चलते। सो द एक्सप्रेशन x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय, सो यू कैन क्लियरली सी कि हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो फिर इसके कोई भी रियल रूट्स अपन गैस नहीं कर सकते, तो अपने को या कोई और तरीके से गैस करना पड़ेगा। सो एक अच्छी चीज मुझे ये याद है कि वी कैन राइट दिस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर, पर ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लस 2 एक्स पावर 4 अपने को लगने वाला है, तो वो तो नहीं है अपने पास में, सो माइनस एक्स पावर 4 यहाँ पे डाल दो। क्यों? क्योंकि जब जब तुम इसको एक्सपांड करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, प्लस एक्स पावर 4, तो वो तो है यहाँ पे, राइट। दिस थिंग इज जस्ट एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 into x power 4 plus x square plus 1, so not that hard actually. oh yeah, और फिर अपने को उसको भी फैक्टराइज करना है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये देखूँ, वी कैन राइट दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर तुम्हें माइनस 2 एक्स स्क्वायर वगैरह लगने वाला है, तो उसके लिए तुम्हें प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखना पड़ेगा। या दैट्स नॉट गुड, राइट। यहाँ पे 2x, नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस 2 एक्स स्क्वायर आएगा, तो मुझे माइनस 3 एक्स स्क्वायर रखना चाहिए। Then this would just be x square minus square root 3x plus 1 into x square plus square root 3x plus 1। तो ये दोनों तो एटलीस्ट फैक्टर रहेंगे इसके। सो c है, d है। सिमिलरली इसका तुम कुछ तो भी कर सकते हो शायद से। सो कैन राइट दिस एज x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 into x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये तुम्हारे चार फैक्टर्स हैं, राइट, चार क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। So let's see, x square minus x plus 1, yes that's a factor, ये भी एक फैक्टर है, और ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। सो चारों के चारों 49 का ABCD, 49 ABCD 50। let z be a complex number satisfying the equation z power n equal to z power negative m where n m belong to natural numbers, then oh okay, so let's say कि अच्छा एक बात तो सही है कि अगर n और m अगर वो यस लाइक n, इफ n इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव m, जो कि हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स है। सो ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव रहेगा, ये ऑफ कोर्स नेगेटिव रहेगा, ये जो भी चीज़ है। दैट मीन्स कि हाँ ये पावर सेम तो नहीं हो सकते। सो इसका मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड है मतलब मॉड आर सॉरी मॉड जेड जो है विच इज आर, दैट थिंग शुड बी 1 और -1। सो ओके, it's like plus minus 1 something, but at least अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि in that case z is just e power I theta, right, but theta goes from 0 to 2 pi, we can always write z like that because उसका magnitude 1 है। so फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, that means कि e power I n theta equal to e power negative I n theta। तो दोनों कोसाइन और साइन दोनों के दोनों सेम होनी चाहिए। इसका यही मतलब है कि n थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव m थीटा प्लस 2n पाई। एक्चुअली 2n नहीं यूज करके 2k पाई यूज करते हैं, यहाँ पे k इंटीजर, सो m प्लस n इंटू थीटा इक्वल टू 2k पाई, सो इट्स पाई, सो थीटा शुड बी 2k पाई अपॉन m प्लस n, राइट। तो इफ n इक्वल टू m द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन विल बी फाइनाइट। हर थीटा जो है वो अपने को अलग अलग वैल्यू देगा, नहीं, सिर्फ जो थीटा क्या बोलता हूँ मैं, जो थीटा 0 to 2 पाई है अपन वही कंसिडर करेंगे सिर्फ, बट 2k पाई अपॉन m प्लस n ऐसे तो हजारों हो सकते हैं ना। If m equal to n, okay, number of solution of the equation will be finite. No, नहीं, फाइनाइट वेट व्हाट एक्चुअली या बस थिंक ऑन इट, कोई तो भी फिक्स्ड वैल्यू रहेगी m और n की, राइट। तो तुम्हारी k की वैल्यूज कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ ही है, ताकि वो 0 to 2 पाई में तुम थीटा की रेंज रख सको। ओके, if n equal to m, number of solutions of the equation will be infinite. If n is not equal to m, number of solutions of the equation will be n plus m. अच्छा, अगर n और m इक्वल नहीं है देन इनफैक्ट ओके एनी जनरल केस लिए करते हैं अगर, राइट। सो कोई तो भी ये कोई तो भी टाइप का इंटीजर है ये, राइट, देन k कैन गो फ्रॉम लेट्स से 1 से स्टार्ट करेगा तो फिर 2 पाई अपॉन m प्लस n, वो 2 पाई से छोटा है, तुम 2 जैसे इनफैक्ट तुम k तो 0 भी रख सकते हो ना,
राइट। तो थीटा कैन बी जीरो एज वेल, तो तुम जीरो से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 चलते जाओ टिल इवेंचुअली गेट समथिंग विच इज m प्लस n माइनस 1, राइट। वो 2 पाई से छोटा रहेगा और उसके बाद m प्लस n आएगा जो कि अपने को 2 पाई देगा, विच इज वॉट वी वोंट इंक्लूड क्योंकि अपन ने ऑलरेडी जीरो इंक्लूड किया है। तो 0 to m plus n minus 1 there will be exactly m plus n solutions in either case। अगर या m equal to n, m is not equal to n, फर्क नहीं पड़ता। But really what happens if m is equal to n? Well in any case in negative m है ना, so no, उसका अपन मॉड चेंज तो नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे बाई चांस सिर्फ पॉजिटिव एम होता तो फिर काम बन जाता कि हाँ अपन उसका मॉड जो है उसको अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं मैग्नीट्यूड की, बट यहाँ पे नहीं है। सो इन बोथ केसेस, सो m इक्वल टू n, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन विल बी फाइनाइट, वेरी करेक्ट। और c, या सो a and c। (51) given sin alpha plus sin beta equal to 1/4 and cosine alpha plus sin beta equal to 1/3, so the following is are correct। तो तुम्हें cosine of alpha minus beta upon 2 ढूंढ रहा है, sin of ओके ओके आह अपन वही कर सकते ना, इनको इनको मतलब इनको या प्रोडक्ट में लिखो तो फिर 2 sin of 1/4, राइट। यहाँ पे 1/8 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे तो अब क्या, आई मीन यू कैन फिगर आउट कि tan of alpha plus beta upon 2 क्या होना चाहिए। yes but what from there? okay let's just do it। कुछ अपने को रेंज दी अल्फा बीटा की नहीं, ये अजीब है। अच्छा पहली बात तो ये दोनों सेम साइन थे, वो तो ऑब्वियस है। चलो अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, दो पॉसिबिलिटीज है अपने पास। ओके फाइन, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 tan ऑफ दैट थिंग इज व्हाट, दिस अपॉन दैट यानी कि 3/4। हाँ ओके, अपने को क्या क्या पूछ रहे हैं, अपने को पूछ रहे हैं कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अपन ये चीजें तो नॉर्मल तरह से ढूंढ सकते हैं। और कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 ये कैसे ढूंढोगे? सो प्लस माइनस में आएगा ऑफ कोर्स, सो 3 4 5 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इट कैन बी प्लस माइनस 3/5 और ये चीज प्लस माइनस 4/5 रहेगी। तो दैट इज मींस कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 दैट इज क्या कर रहा था मैं, 3/5 राइट। सो 5/24 plus minus, I think that's correct। yeah sure, so it's gonna be 5/24, 25। no that doesn't make sense, it doesn't। sin of plus beta upon 2 that should be 3/5 and अगर वैसा है तो फिर that should be 5/24 और वो तो नहीं है यहाँ पे। so cosine of alpha minus beta upon 2 magnitude by 5/24। यहाँ पे अगर तुम देखोगे cosine of alpha plus beta upon 2 that is just 4/5, तो ये उधर जाके हो जाएगा 5/24, सेम थिंग। सो ये तो करेक्ट नहीं है। sin of alpha plus beta वो तो अपन डायरेक्टली यहाँ से ढूंढ सकते हैं। so जिसको 2t 3/2 upon 1 minus t square, actually 1 plus t square, so 9/16। 16 से मल्टीप्लाई करो, 24 upon 16 plus 9 25, there we go, so 24/25, so C correct है। cosine of alpha minus beta, yeah of course cosine of alpha minus beta। look अपने को cosine of alpha minus beta upon 2 पता चल गया, उसका अपने को स्क्वायर पता चल गया इनफैक्ट, राइट। बिकॉज क्या था वो 5/24 राइट, प्लस माइनस, बट फिर उसका स्क्वायर जो रहेगा वो सिर्फ स्क्वायर रहेगा। सो 2 times of 2 times t square minus 1 that should be cosine of alpha minus beta, इसका डबल है। so yeah 2 into 25, या फिर एक काम करो 25 अपॉन, well, यहाँ पे नहीं 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 नहीं, ये तो बुरा हुआ।
5.24 का स्क्वायर है। ओके, 2 into 5 अपॉन, क्या आप लोग करना ही पड़ेगा, 12 into 24, T2 गया ना जब अपन 12 कर दिया, तो 12 into 24 लाइक दैट, minus 12 into 24 ऑलमोस्ट, so it's gonna be negative and it's going to be very bad. करो कैलकुलेट, क्या है ये, 48 and 12, 48 and then 1 24 of it, 288. So it's gonna be 5 minus 288 यानी कि negative 283 upon 288. That's the thing. और क्या वो यही है? नहीं, वो ये नहीं है, कुछ और आ गया. So no, it doesn't. Oh, it should be square root. It's like 25 actually. Yeah, in that case, 288 minus 25, that is 263. तो हाँ सही है, ये भी सही है. In fact, cosine of alpha minus beta, that's correct. Tan of alpha plus beta, so that will just be 2t upon, okay, what's up? So 2 into 3 upon 5 था ना, 3 upon 4 upon 1 minus 9 upon 16. So almost the same stuff. तो ये उधर जाएगा, राइट, तो फिर 24 upon 60 minus 9, 7, so 24 upon 7. Not this thing, this is not correct. तो D incorrect है, B करेक्ट है, C करेक्ट है. 51 का B और C. 52 is given A vector, given, okay, B vector दिया हुआ है, C vector दिया हुआ है, values of alpha for which the equation has non-trivial solution x y z. ये जो इक्वेशन रहेगा इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है. तो यहाँ पे अल्फा एक्स आई हैड, ओके, वाई, जस्ट वाई इज दैट द मीनिंग? दिस इज बैड. एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर. ओके, सो यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई जेड स्केलर्स हैं. दिस इज जस्ट बैड. बट या ये एक्चुअली क्या 3 इक्वेशंस काइंड ऑफ रहेंगे. So more like this thing, A vector, B vector, C vector. ये डॉट, सो ये ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मैट्रिक्स होना चाहिए, बट यू गेट इट राइट. सो दिस टाइम्स दिस मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, दैट शुड जस्ट बी इक्वल टू व्हाट, अल्फा टाइम्स ये सारी चीज, तो फिर अल्फा टाइम्स एक्स वाई जेड. व्हाट डज दैट मीन? दैट जस्ट मीन्स कि A minus 1, B minus 1, C minus 1, ये जो मैट्रिक्स रहेगी, दैट टाइम्स एक्स वाई जेड, दैट इज इक्वल टू 0, राइट. तो अगर एक्स वाई जेड मतलब अपने को नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, तो ऑफकोर्स 0,0,0 तो एक सोल्यूशन है ही था, वो बहुत ट्रिवियल है. तो इट शुड बी अल्फा एक्चुअली, बिकॉज या, और अगर अपने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए तो क्या होना चाहिए कि इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाना चाहिए. ओनली इन दैट वे कैन यू एक्चुअली गेट इट, क्योंकि 2 पॉइंट्स 0 पे मैप कर रहे हो तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए. ओके, कूल. तो वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर व्हिच determinant is 0. Shit, it's going to be what, a 3-degree equation? No, I'm not interested in that. करना तो पड़ेगा अपने को. So let's do it. क्या डिटर्मिनेंट है? A के लिए है 3, 2 and 4 minus alpha. Okay, and B के लिए है, सिर्फ I और K है, J नहीं है. 2, 0, 2, okay, minus alpha, and finally C के लिए, बहुत बड़ा लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा छोटा लिखूँ इसको. C के लिए सिमिलरली 4, 2, 3, हाँ सिमिलर पहले वाले से. जो डिटरमिनेंट है अपने को ये 0 रखना है. तो फिर कुछ कैंसिल वगैरह अपन कर सकते हैं, राइट. इसको दोनों इस पे सब्ट्रैक्ट करो, जस्ट गेट 1, 2 and 2, and then 2 minus alpha, 2 minus alpha, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में हमको मिलेगा 2, 2 and 1. ओके, या अब क्या, आई मीन तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो फिर तुम्हें कुछ और नई चीज़ मिल जाएगी, बट नहीं, यहाँ पे 2 और 2 है, नो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया. तो फिर ठीक है ना, अपने को सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली. सो 1 इंटू ये सारी चीज़, यानी कि 1 इंटू नेगेटिव अल्फा, नेगेटिव ऑफ वो सब, तो फिर बेसिकली अल्फा टाइम्स 2, सो 2 अल्फा बिकॉज -2 राइट, -4 बिकॉज -2 था.
फिर बाद में निगेटिव ऑफ ये चीज, तो फिर अल्फा माइनस टू इंटू क्रॉस क्रॉस करना अपने को, सो टू माइनस फोर दैट्स नेगेटिव टू, फाइनली प्लस टू इंटू ये सब, सो फिर फोर माइनस टू अल्फा माइनस ऑफ माइनस प्लस, सो प्लस टू अल्फा लाइक दैट। और ये तो कैंसिल हो गया, बहुत ही अच्छा। तो ये ब्रैकेट की, सो ये क्या हो जाएगा, वन इंटू वट, जस्ट अल्फा माइनस फोर बेसिकली, और ये चीज हो जाएगी माइनस टू अल्फा प्लस फोर, एंड दिस थिंग विल बी प्लस एट थिंक, ये गया माइनस अल्फा प्लस एट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स अल्फा हैज टू बी एट, सो सी इज द सोल्यूशन 52 का सी। Right, next question 53. 53 is let f of x be equal to this thing. So and g of x भी अपने को दिया हुआ है, so the following is correct about g of x. f of x अपने को एक क्यूबिक दिया है, g of x is okay defined like this, max of f of t, okay 1 और x के बीच में। so अगर 7/2 में है, ओके ओके ओके, अपने को g ग्राफ करना पड़ेगा यार, बस एक्चुअली अपन f का पहला डेरिवेटिव ले सकते हैं, क्योंकि होता है कि यानी ये कुछ अच्छा देख ले तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 विच इज जस्ट 6 इंटू x for minus 6x plus 6, तो yeah well this limit is just peaceful 36 minus 4 is minus 24, हाँ यार इसका इसमें पॉजिटिव है तो फिर ये काम नहीं करेगा, बट क्योंकि अपने को ये रेंज दी है पर्टिकुलरली, लेट्स लुक एट दिस रेंज 1 till 7/2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 3 पे, राइट, एंड 7/2 इज इन फैक्ट ओके इट्स नॉट गुड, नॉट गुड, इसमें बीच में कहीं तो एक मिनिमम आने वाला है, राइट, दिस डजंट मेक सेंस, ओके इट्स नॉट ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव इन दिस रेंज, दैट्स जस्ट बैड, पर 1 पे क्या वैल्यू होगी इसकी, इज जस्ट 1 minus 6 plus 6, दैट्स पॉजिटिव, oh no, and 7/2 पे वैल्यू क्या है इसकी, this is not good, it's just not good, 7/2 क्या 3 से बड़ा है, 3 पे इसका सबसे नेगेटिव हो जाएगा, और फिर बाद में वहां पे भी नेगेटिव वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव थी, not going to work, oh sorry it should be 5 I think, then it can be written as x minus 2 into x minus 3, तो ये 2 और 3 के बीच में नेगेटिव रहेगा, जो कि हाँ इस रेंज में है, और अदरवाइज ये पॉजिटिव रहेगा इसका डेरिवेटिव, बट इससे अपने को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अपने पास में सिर्फ अपने को दो ओके, सो 2 और 3 जो है दोज आर एक्सट्रीमम पॉइंट्स, उसके अलावा इसको कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, तो देखो ग्राफ करना पड़ेगा एक्चुअली एफ ऑफ एक्स को, तब अपन कुछ कर पाएंगे, पर तो क्या ढूंढना है, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी व्हेन टी इज बिटवीन 1 and x, ठीक है, and this is 12 minus 2x, the following is correct, तो क्या क्या पूछ रहे हैं, कंटिन्यूअस, ग्रेटेस्ट वैल्यू, 5, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ओके, तो इस रेंज में तो जो भी एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही सेम चीज है, तो या जो भी एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू थी वही जी की भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, राइट, ओ वेट, अगर मैं इसको एक्चुअली एफ को अगर मैं ग्राफ करूं, सो दिस इज 0, दिस थिंग इज 1, यहाँ पे कभी कभी 3 है, बल 2 और 3 है ना, तो फिर यहाँ पे 2 और ये क्या है 3.5 समथिंग लाइक दैट, राइट, तो 2 और 3 पे अपने को मैक्सिमम मिनिमम टाइप की चीज मिलने वाली है, 2 पे इस चीज की वैल्यू क्या है, मुझे ढूंढने की इच्छा तो नहीं है, बट लुक 2 और 3 अपने रूट्स थे, और फिर यहाँ पे अपना जो डेरिवेटिव है वो निगेटिव था, यहाँ पे अपना डेरिवेटिव पॉजिटिव था, तो फिर ये क्या ग्राफ, ये अपना जो एफ ऑफ एक्स है उसे कैसे होना चाहिए कि पहले वो इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे वो मैक्सिमम अटेन करेगा और यहाँ पे डिक्रीज करना शुरू करेगा, सो या कूल, तो अगर मैं एक ऐसी ग्राफ बनाऊं, चलो ठीक है ना 2 3 निकाल ही लो, क्योंकि अपने को पता है कि सिर्फ जो 2 रहेगा, राइट, सो यहां तक वो इंक्रीज कर रहा है ना 2 तक, ऑफ कोर्स, और इसके 2 ही पॉइंट्स थे मैक्सिमम मिनिमम के, दैट मींस कि
यहाँ तक इनफैक्ट एफ ऑफ एक्स जो है वही जी ऑफ एक्स भी है, क्योंकि एट एनी गिवन एक्स यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इतने रेंज में, राइट। और उसके बाद में जब ये डिक्रीज करना शुरू होता है तो फिर मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाती है सेट, तो उसके बाद में ये इस टाइप का एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा और तब तक ये इस टाइप से इंक्रीज करेगा, राइट। तो व्हाट इज इन फैक्ट एफ ऑफ टू? एफ ऑफ टू इज so 2 into 8 16 16, then minus what 4 into 5 minus 16, then 72 minus 23. So what is this? क्या है 88 minus 83 just 5. So 2 पे इसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए. f of 2 is 5, which is positive. That's all we need to know. वन पे भी इसकी वैल्यू ढूंढ सकते हैं, बट लेट इट बी, इनफैक्ट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद में कॉन्स्टेंटली इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, यहाँ तक वो इंक्रीज करने का। वन प्लस वैल्यू क्या है? 2 minus 15 plus 36 minus 23, राइट। सो 37 minus 38 यानी कि -1, सो दैट मीन्स समवेयर ओवर हियर और फिर इस टाइप से इंक्रीज कर रहा था। पर यहाँ पे इसका स्लोप जो है वो 0 था, इसका डेरिवेटिव 0 था, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, इसका डेरिवेटिव भी कंटीन्यूअस है इनफैक्ट। कूल, सो दैट्स नाइस। मतलब कि हाँ, g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एटलीस्ट, और फिर टिल 7/2 ये चलते जाएगा और इवेंचुअली 7/2 पे तुम अलग रेंज में चल जाओगे। तो फिर जब 7/2 रहेगा, इट्स 12 minus 2 into 3.5, 12 minus 7 basically, 12 minus 7 is 5 very much. So yeah, यहाँ पे कंटिन्यूअस है। और इसका डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव है जस्ट -2. Oh no, oh no, यहाँ पे f dash कंटिन्यूअस नहीं है, it's not differentiable everywhere, it's not particularly differentiable at x equal to 7/2, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है। so ये कुछ तो भी ऐसा जाएगा। so it's continuous, yes. Is it differentiable? No. Has greatest value 5, very correct. So C is correct, A is correct, 53 का ही answer। 54 is, what is 54? If this equation has equal roots and the integral value of a is, okay, ये equation के equal roots है। okay, seriously, come on, what's this? X squared minus a plus 10x, wow, plus 10a plus 1 equal to 0. इसका discriminant 0 है, so basically इसका square a squared plus 20a plus 100 e squared minus 4ac, so minus 4 times minus 40a minus 4, that has to be equal to 0. That just means कि a squared minus 20a plus 100 minus 4, 96 equal to 0. Okay, cool. So values of a, मुझे सिर्फ ये सॉल्व करना है। 96 is what? 3 into 32 I think, which is 3 into 2 power 5, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। I'm assuming कि आपको 4 का मल्टीपल में क्लिक करना पड़ेगा, so 4 times 8 maybe, so 24 and 8 not working. Wait, what? No, 24 and 4, sorry. 3, 8, 24 into 4, right. नहीं, उनका सब्ट्रैक्शन 20 है, ये तो पॉजिटिव चाहिए, सॉरी, तो ये सही नहीं है। थोड़ा कुछ छोटा नंबर नहीं अपने पास में, सो लाइक 12 and, yeah, 12 and 8, of course. a minus 12, a minus 8. So 12 and 8 is the value, that's it. So B and D, 54 का B and D. 55 is, if 10 factorial is equal to this, okay, then seriously, ठीक है। देखो कि 2 की मैक्सिमम पावर 10 फैक्टोरियल में कौन सी आती है, तो फ्लोर फंक्शन 10/2 प्लस फ्लोर फंक्शन 10/4, फिर फ्लोर फंक्शन 10/8, अगला फ्लोर फंक्शन तो 0 हो जाएगा क्योंकि 10/16 1 से कम होता है। या दिस इज जस्ट 5 प्लस 2.5 का फ्लोर फंक्शन 2 प्लस, yeah, seriously, and this thing is just 1, so 8, p is 8, so a is correct. Similarly अपने को 3, 5 और 7 के लिए भी करना है, this is just the worst. okay, q के लिए करते हैं, so 10/3 का फ्लोर फंक्शन, that's 3 point something, so 3
प्लस 9 के लिए 1 एंड देन उसके बाद में नहीं होता है, तो फिर 4 q शुड बी 4, सो b इज आल्सो करेक्ट। लेट्स डू फॉर 5, सो पहले 2 आएगा फिर बाद में 25 आ जाएगा शायद से। नो, सो जस्ट 2, सो c इज आल्सो करेक्ट। एंड फाइनली 7, तो इट्स नॉट 2 यार, इट्स जस्ट 1, क्योंकि 10 फैक्टोरियल में सिर्फ एक ही 7 का मल्टीपल आता है, क्योंकि अगला 7 का मल्टीपल डायरेक्टली 14 है जो कि 10 के आगे है। सो या s is not 2, it's just 1, right? Next, 56, equation of common tangent to this thing। ठीक है, ये एक ellipse है, ये पैराबोला है, इनका कॉमन टेंजेंट। ओके 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 ओके, अपन तो ये भी सोच सकते हैं ना कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है टाइप, मे बी। seriously, let's just do this thing. So y equal to mx plus a क्या है इसमें, 4 upon m, that's the tangent for this parabola, और y equal to mx plus minus square root of a square m square 10m squared plus b square plus 6, this is the tangent for the ellipse। so of course ये दोनों चीजें equal होनी चाहिए, that just means 16 upon m squared is equal to 10m squared plus 6, in other words 8 equal to 5m squared plus 3 into m squared। so क्या हो गया इसको, so 5m power 4 plus 3m squared और फिर minus 8, that's equal to 0। स्प्लिट कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स 5m power 4 plus 5, no, not plus 5, it should be negative 5, I think so, negative 5m squared plus 8m squared minus 8 is equal to 0, so that just means m squared minus 1 into 5m squared plus 8, oh no, ये तो काम का ही नहीं रहा। so ये गया, so m can only be plus minus 1, yeah, that shows of course, and 4 upon plus minus 1, so basically what, y equal to plus minus x minus plus 4, like that। look यहाँ पे क्या है, y equal to x plus 4, no, not going to work, y equal to negative x plus 4, that does work, and y equal to negative x, नहीं, y equal to x minus 4, that also works, so a and d I think, so 56nd, 57th, over 57th, which of the following expressions have their value equal to unity। तो ये चीज, yeah, it's just cosine square minus sine square, so cosine square minus sine square plus 2 sine square, just cosine square plus sine square, that's 1, so a works, b is sine square theta cosine square 5 cosine square, come on यार, ये इतना बड़ा एक्सपांशन मुझे, look एक ही सा स्क्वायर दूसरी चीज, राइट, आई थिंक आई एम गेटिंग द पैटर्न ओवर हियर। सो एक काम करो ना, साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों से कॉमन ले लो, जिसको साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, और यहाँ से तुम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, सो ऑफ कोर्स जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट, और फिर दूसरा ब्रैकेट रहेगा कोसाइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, सो जस्ट 1, सो बी आल्सो वर्क्स, नाइस। साइन ऑफ 285 डिग्री माइनस थीटा कोसाइन ऑफ, यार मुझे ये टाइप की चीज पसंद नहीं आती, बट लोग वहाँ पे तुमने स्विच कर दिया, बस कोसाइन में है, फर्क नहीं पड़ता, सो स्विच बैक, एंड या ये तो सेम चीज है, तो फिर जस्ट साइन ऑफ ए कोसाइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ बी कोसाइन ऑफ ए, exactly, that's just sine of a plus b, so 285 degree minus theta plus 165 degree is what, sine of what, 0 1 carried on 7 5 1 carried on 450 opposed 450, so sine of 360 निकाल लो, इसमें से क्या बचता है 90, sine of 90 is 1, very correct, it's also 1, so c is also 1, okay, oops, c, not d, d is sine square theta upon 2 into 1 plus cot square theta plus, come on yeah, seriously, what's this, it's just c square upon s square, तो s square ऊपर जाएगा, just becomes 1, and then this thing is upon s square, and that cancels, so it's just 1 upon, hey I'm thinking कि हमेशा जरूरी नहीं है ना कि ये चीजें डिफाइंड ही हो, सो मे बी इनमें से कुछ कुछ नॉट डिफाइंड हो गए, कुछ कुछ थीटा और फाई की वैल्यूज के लिए, बट ओके क्या फर्क पड़ रहा है, जस्ट आई मीन ऑफ कोर्स ए तो कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता, बी कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, सी कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, बट डी कैन बी नॉट डिफाइंड एट लॉट ऑफ पॉइंट्स, सो अगर थीटा फॉर एग्जांपल पाई बाय 2 है, 0 है, इस वैल्यू पे
काम नहीं करेगा नहीं, either value equal to unity. I don't know, D थोड़ा सा ambiguous है, but I'm going to go for D as well. Right. It's just 1 by 2 plus 1 by 2 wherever it is defined. 58 और लिमिटिंग केस में भी वो डिफाइंड है, तो अपन इस डिसकंटिन्यूटी को इजीली रिमूव कर सकते हैं, इवन दो वहां पे है वो डिसकंटिन्यूटी. 58. Let f(x) be equal to mod of x minus 1 minus 3, then the points where f(x) is non-differentiable. Come on, just graph this thing. So अपने को सिर्फ कौन सी इसकी चिंता करनी है. Let's go for, let's say 1 and this one will work. -1 to 1 देखते हैं. Right, in that case x squared is less than 1, so this just becomes what, mod of 1 minus x squared minus 3. That just means -2 negative x squared. Well, of course it's default ये पॉजिटिव ही होता है, so that just means 2 plus x squared. ये तो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन और फिर x squared, तो फिर इस टाइप से जाना होगा. 1 पे क्या वैल्यू चाहिए इसकी 3 वैल्यू होती है आई थिंक. ओके, थोड़ा सा इस टाइप का रखना पड़ेगा आई गेस. राइट, तो फिर यहाँ पे 2 वैल्यू, यहाँ पे 3 वैल्यूज की. उसके बाद में क्या, व्हेन इट इज बिगर देन 1, x squared is bigger than 1, then this will become mod of x square minus 4. ओके कूल. तो अब अपने को 2 तक लिखना पड़ेगा, सो 2 and -2. Look, till 1 to 2 ये जो चीज रहेगी that's negative, that means it's 4 minus x square actually. So at 1 it's just 3, so that's cool, and it decreases, so 4 minus x square till eventually you get to 2, और फिर वहां पे ये 0 हो जाएगा. So ये डाउनवर्ड पैराबोला kind of thing है, और yeah I think that makes sense. 4 minus x square. No wait, 4 minus x square. ये डाउनवर्ड पैराबोला का शिफ्ट कर दिया है. Oh ये ऐसा होना चाहिए इस टाइप से. I mean of course derivatives मैच नहीं करेंगे, but like okay ग्राफ कुछ तो भी ऐसा बनेगा. और फिर 2 के बाद में it just becomes x square minus 4 because mod, right? तो ये ऐसा था, but अब ये ऐसा हो जाएगा, right? बहुत ही अजीब ग्राफ है. So f of x is non-differentiable. It's non-differentiable at this point, this point, this point, and this point. So 4 points. Yeah, so 1 -1 2 and of course 2 और -2 पे तो वो पूरा का पूरा नॉन डिफरेंशिएबल है. 1 and -1 पे भी इनफैक्ट वो काइंड ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल है, बिकॉज ये अपवर्ड पैराबोला था और यहाँ पे से डाउनवर्ड पैराबोला आ गया, तो इसका स्लोप ऊपर चाहिए और इसका स्लोप नीचे चाहिए, तो कैसे हुआ है, राइट? सो 1 -1 and 2 -2, so 58 के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं. ओके, A B C D. Let's go for 59th. If the tangents to this thing at P and R meet meeting Q and S is the focus, and the following is correct. इसके tangents P and R पे जो बनाए गए वो those meeting Q and S is the focus. Okay, तो Q पे meet कर रहे जब, okay, which of the following is correct. मुझे पता नहीं P और R कौन से point है, Q कौन सा point है. What am I supposed to do with this? Abscissa of P and Q and R are in GP. What? Abscissa is the x-axis, like x coordinate, right? So P, Q, R के x values GP में है. Why should that be? 8 and Q. नहीं, so क्यों होगा आखिर? मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए. No, it's not true, right? ठीक है, करते हैं. So दो tangents कब meet करते हैं? Just have y t equal to x plus at square. That's the general equation, right? So y square चाहिए था. Y t1 equal to x plus at1 square. Y t2 equal to x plus at2 square. अपने को क्या ढूंढना है? अपने को x value ढूंढनी है. So multiply by t1 t2 or something. So yeah, more like divide by t1 and divide by t2. यहाँ पे जगह 0 equal to x into 1 upon t1 minus 1 upon t2 plus a into t1 minus t2. And that just means कि अगर t1 equal to t2 नहीं है, that means कि a upon t1 t2, sorry, x upon t1 t2
is equal to a. So yeah, x is just a t1 t2, which is in fact the geometric mean of a t1 square a t2 square. So हाँ ये करेक्ट है. क्यों ऐसा? ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है. या सो ए इज करेक्ट. ओके, ऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू एंड आर इन ए पी. वेल या दैट्स वेरी करेक्ट क्योंकि इनका जो मिड पॉइंट उनका ऑर्डिनेट सेम रहता है. तो यस, बी इज आल्सो करेक्ट. एस पी एस क्यू एंड एस आर इन जी पी. वेल लुक, वो डायरेक्ट्रिक्स से रहेंगे. सो नहीं, ये सही नहीं है. ये सारे एक्स कोऑर्डिनेट्स रहेंगे सिर्फ. सो इट्स ए एंड दैट जस्ट मींस बी. What you are saying is कि a into t1 square minus 1 and then a into t2 sorry plus 1 t2. Yeah, t2 square plus 1. Actually नहीं, बीच में ये आएगा ना, a into t1 t2 plus 1. और ये तीन चीजें जीपी में है. I don't think so. So C is not correct. A and B are correct. So कितना करें? Let's go to 60. 60 is क्या टाइम हुआ अभी? Whatever. 60 is let 1 plus x square into 1 plus x to the power n be equal to this thing. If these are in AP, then the value of n is. Ooh, these are in AP, then the value of n is. So यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिए, मैं डायरेक्टली गेस चेक कर सकता हूँ क्या? आई डोंट थिंक दैट्स गुड आइडिया. 1 plus x square का स्क्वायर. हाँ, एंड सो सिर्फ a1 a2 a. ओके, सिर्फ ये जो पहले तीन है दोज आर इन AP. एक काम करो ना, तो ओके ए जीरो तो बहुत ईजी है. यहाँ पे जो वन आएगा सिर्फ उसके साथ में मुझे इसको मैच करना है. सो ए जीरो शुड बी वन बेसिकली. ए जीरो इक्वल टू वन. लेट्स गो फॉर ए वन. तो सारे एक्स वाले टर्म्स. लुक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा डायरेक्टली और फिर एक्स पावर 4 आएगा. तो एक्स वाली टर्म सिर्फ तब आएगी जब मैं 1 इंटू यहाँ की एक्स वाली टर्म्स मल्टीप्लाई करूँ. और यहाँ पे क्या है? सिर्फ NC1. सो NC1 into x power 1 something like that. So A2 is A2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर भी आने वाला है. सो x स्क्वायर टाइम्स कांस्टेंट टर्म और 1 टाइम्स x स्क्वायर टर्म. दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी. तो x स्क्वायर टर्म यहाँ पे जो एक्सपेंशन में देख रहे हो n into n plus 1. एक्चुअली इसको वैल्यू n लिखता हूँ. सो n into n plus 1 upon 2 sorry n minus 1 from NC2, right? So दिस इज द एक्सपांशन टर्म. और प्लस यहाँ पे जो एक्स वन आएगा वो टाइम्स कांस्टेंट. सो कांस्टेंट 1 है. कूल. या और ये जो है वो एपी में है फॉर सम रीजन. ओके, देन यहाँ का डिफरेंस ऑफ कोर्स n minus 1 है. तो ये भी डिफरेंस n minus 1 होना चाहिए. सो दैट जस्ट मींस कि n into n minus 1 upon 2 plus 1 minus n equal to n minus 1. I mean, yeah. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो जस्ट n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 माइनस 2n इक्वल टू 2n माइनस 2. हाँ, n स्क्वायर माइनस 3n बट यहाँ पे प्लस 2n. सो माइनस 5n. इनफैक्ट माइनस 5n प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो n माइनस 4 इंटू n माइनस 5. सो n माइनस 1 इक्वल टू 0. सो 1 और 4. Yeah, wanna believe in that. तो probably 4 correct है. Yeah, because okay, क्या गलत हो सकता है? I don't think इसमें कुछ गलत लगा है क्या? It does feel like it's just 4. Value of n is r. But यहाँ पे क्यों नहीं है आखिर? I don't get it. और वहाँ से 1 आएगा. Yeah. Oh no, it should be 2 of it. Yeah, because ये x square यहाँ पे 2x square में आएगा. So it should be actually 2 over here. तो सब कुछ ओके था एक्सेप्ट कि यहाँ पे 2 देना चाहिए था. So it's gonna be 2 like that. और फिर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा it's gonna be 2 times 2 4. तो फिर 4 plus 2 should be 6. And that means कि 2 and 3 are the solutions. So that should be thing. A and B. यार ये क्या होता रहता है? Just wait a second. Just wait a second. Okay, I think we're back. So 2 and 3 is the way to go. Okay, 61st.
Let's go for it. 61. 61 is consider the points a okay 0 comma 0 0 comma 1 1 comma 1 in the xy plane. Suppose that the points x comma 1 and 1 comma y line on a line, okay, passing through O and choosing that बहुत बड़ा है. Let's do it. Okay, so O 0 comma 0 है, A is 0 comma 1 somewhere over here, and B is this 1 comma 0. Wait, what? No, B is 1 comma 1. This thing is B. हाँ, क्या करूँ इसके बारे में? Point C x comma 1, so y coordinate 1 x, so C कहीं तो भी यहाँ पर है, and D 1 comma y, so 1 and y is somewhere like that. Huh. On a line passing through O. Susan said, wait, what? On a line passing through O? Why on a line? Huh? This doesn't make sense. क्यों आखिर ये एक लाइन पे क्यों, और वो भी O से पास होती हुई लाइंस? This doesn't make sense. Like अगर ये ऐसे पास हो रही थी, then of course ये इस लाइन पर रहेगा, then it's gonna be like this. Okay, whatever. Such that 0 is less than x is less than 1, like the sum of the areas of. Okay, अपने को अच्छा फिगर इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो D यहाँ पे नहीं रख के फिर क्या काम करते हैं, C को भी चेंज कर सकते हैं ना. ओके, D को चेंज करते हैं. सो लेट्स से कि ये जो पॉइंट है ये D. ओके ओके, सो 0 is less than x is less than 1. Wait, what? अच्छा, जो C है वो A और B के बीच में है. Okay, I get it. Then this is not what they want us to do. They want us to do is कि wait a second, this makes sense. थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाते हैं. तो ये अपनी ओरिजिन है, यहाँ पे अपना पॉइंट A था, ये B था, B था, ये भी नहीं है, ये भी है, और यहाँ पे बीच में C है. ओके, और यहाँ पे D रहेगा जो कि इस लाइन पे है. तो इसके बारे में क्या? On line passing through O are such that 0 is next plus 1. Okay, let us sum of the areas of DOPC. DOPC. क्या? How does it even make sense? Look, this doesn't make sense. क्योंकि मैंने अभी कभी कहा कि C और D दोनों लाइन पर है, तो फिर DOPC ये ओके सॉरी DOAC कहा तुमने. ओके ओके ओके, बट क्या उसमें भी तुम C नहीं यूज कर रहे हो, तो फिर वो भी इनफैक्ट डजंट मेक सेंस. लोग तुमने अभी भी कहा यार कि D और C दोनों पॉइंट्स एक लाइन पर है जो कि O से भी पास सकते, तो फिर O और C और D तुम तीनों साथ में कैसे यूज कर सकते हो एक ट्राइंगल में? This doesn't make sense. Point C x of 1, okay, and D 1 comma y on a line passing through O. दोनों पॉइंट्स एक लाइन पे, कि सिर्फ D एक लाइन पे? What? मैंने वही कैसे मैंने कहा, दोनों को मैंने एक लाइन पे डाल दिया. Look, DOAC is not a quadrilateral first of all, and उसका एरिया क्या बोलना चाहते हो यार तुम? And DBCD, seriously, DBCD, क्या पागल हो रहे हैं लोग? मैंने एक ही पॉइंट दो बार कैसे यूज कर लिया आखिर? ये यानी ये तो कोई टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं हुआ, ये एक ट्राइंगल हो गया ना, तो तुम सिर्फ DBC बोल सकते थे. नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही अजीब है, बहुत वेग क्वेश्चन है. ओके नेक्स्ट, मतलब मैं कुछ आंसर दूंगा और ये कुछ और अलग आंसर देंगे लोग, इससे अच्छा ये नहीं करना. 62.
if the vectors a, b, c are such that a is not equal to 0 and a cross b is equal to 2, a cross c, mod of a equal to mod of c equal to 1, तो अच्छा ए सी यूनिट वेक्टर से बी एक टू मैग्नीट्यूड का वेक्टर है and a cross c is equal to 2 times of a cross. Okay. What that means is कि a cross what d vector minus 2c vector, that thing is just 0. So in other words, b minus 2c एक ऐसा वेक्टर है जो कि a से कोलिनियर हो, right? So b minus 2c is some multiple of a. ओके और कुछ और दिया अपने को, और b का मैग्नीट्यूड 2 है, राइट? तो लेट्स से कि b इज लाइक okay, whatever, we'll do that later. And the angle between b and c is cosine. Okay, seriously, cosine inverse of 1 upon 4, huh? Nice. Then b minus 2c equal to lambda a, where lambda is equal to, of course it's equal to lambda a, so k के जगह lambda यूज कर लेते हैं, right? Where lambda is equal to, तो ये चाहेंगे तुम्हें दे दिया, तो बताया कि इनका, come on seriously, just want to find what's the magnitude of b minus 2c, that's all. oh हाँ, और lambda पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो भी आपको देखना पड़ेगा, बट आई मीन अगर तुम a को उल्टा ले लो तो फिर चलता है ना यार, तो हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो सकते हो नेगेटिव हो, doesn't matter all that much. Then yeah, so उनके बीच का एंगल क्या था, cosine inverse 1/4. So basically मैं दो वेक्टर्स देख रहा हूँ, टू मैग्नीट्यूड, इनके बीच का एंगल लेट्स से थीटा इक्वल cosine inverse of 1/4 है, राइट? ये जो वेक्टर, ये 2c वेक्टर, ये जो वेक्टर है वो b वेक्टर है. देन उनका जो सबट्रैक्शन रहेगा, यू जस्ट हैव मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर 4, सेकंड का स्क्वायर 4, माइनस 2 times of first का second का just minus 8, cosine inverse of 1/4 का cosine, and that's 1/4. So it's supposed to be 2 like that. So square root of 8 minus 2, square root of 6. So lambda should be square root of 6. Yeah. That's 8, sure. This is just supposed to be a squared, b squared. Destroy cosine theta. Right? It's got to be square root 6. But it's none of, यार ये कैसे ऑप्शंस है मतलब, but this doesn't make sense क्योंकि तुमने अभी भी कहा कि b का मैग्नीट्यूड 2 है, oh it has मैग्नीट्यूड 4 not 2, okay this is bad. तो b का मैग्नीट्यूड 4 है and now it's going to be different. Yeah, so now it's going to be what, well अपन 2 तो बाहर निकाल सकते हैं, just 2 बाहर निकाले तो फिर मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, 2 and 1 and this is theta, so 1 plus 4 minus 4 cosine inverse of 1 upon, so it's like 1, okay, so 2 into 2, 4 is the magnitude of lambda, but it's actually plus minus 4. So b and c, 63. Is let fn be equal to this thing, okay, I'm just following alternatives is on our correct, so tan of theta upon 2 power n and sec of theta upon 2 power n minus 1. Oh seriously. Okay, so oh you know what, let's say theta upon 2 power n is alpha for now, तो ये क्या हो जाएगा, tan of alpha upon cosine of 2 alpha, isn't that right? Because yeah, it's how it is, because 2 power n minus 1, yes. So now we can do this, it's just tan alpha, gonna call this t upon cosine alpha के मैं लिखूंगा 1 minus t square upon 1 plus t square, so it's gonna be what, t cube plus t upon 1 minus t square, and thinking if अपन इसको split कर सकते हैं इस तरह से, okay,
think, just keep on thinking. इसको कैसे सेलेक्ट करूँगा मैं? आई मीन टेलीस्कोपिंग सीरीज होनी तो चाहिए, बट हाउ? 1 plus tan square. लोग अपने को ऐसा कुछ भी करना पड़ेगा कि वो जो tan थीटा पॉइंट टू पावर n है उसका थीटा पॉइंट टू पावर n माइनस वन हो जाए या फिर n प्लस वन हो जाए somehow, कहीं तो भी वो अपीयरेंस हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? Well, of course, you can definitely write this in a little different way कि तुम इसको लिख सकते हो क्या 1 plus t square और फिर अपन टेलीस्कोप कर सकते हैं, राइट? सो सॉरी अपन इस टाइप से देख सकते हैं अपॉन 2, फिर यहाँ पे 2t आ जाएगा, 2t अपॉन wait what 2t upon oh no no that's not right, that's just not right, but it is just that it's just 2t upon 1 minus t square, and that is tan of theta upon 2 power n minus 1, and of course secant square theta. Okay, that doesn't make sense. That's the way it is, seriously. Okay, try करो ना इसको break करने का, it's just 1 upon 1 minus t minus 1 upon 1 plus t, and that way नहीं नहीं ये काम ही नहीं करेगा because it's no way it's not going to work. So क्या रह गया फिर पास में? It's just 1 plus t square upon 2 and then 2t upon 1 plus t square, that's all we know. So it's like 1 plus tan square of alpha upon 2 and then it's tan of 2 alpha for some reason. Seriously though, it is just not working. Then it's secant square alpha for no 1 plus tan square alpha. और think about यार क्या कर सकता हूँ जिससे ये हो जाए? secant है इसको फाइंड नीचे आ गया, which of the following is not correct? तो यहाँ पे अपने को ओके 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 2 पाई 4 पाई तो काफी इजी है. नो वेट एक्चुअली नहीं, इसमें तो कुछ भी इजी नहीं रहेगा एक्चुअली. सो अब अगर आप टेलीस्कोप नहीं करते हैं तो फिर इम्पॉसिबल होगा. लोग इट्स प्रेटी क्लियर कि तुम इसको डायरेक्टली टेलीस्कोप नहीं कर सकते हो, बट ऐसे कुछ और है जो अपन कर सकते हैं शायद. 1 plus t square somehow t square को तुम अलग फॉर्मेट में लिखो कि it works out somehow. t square you think then tan 2 alpha, अपने को पूरा tan 2 alpha नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ आधा पूरा tan 2 alpha चाहिए. तो come on man, there's going to be some kind of telescoping something that this would work. तो अभी अपन ने इसको क्या डिस्कवर किया है? इट्स secant square of alpha and then tan of 2 alpha. That's what we can write this as. और at the same time अपन इसको और अलग अलग तरह से भी लिख सकते हैं. अपन इसको लिख सकते हैं tan alpha and secant 2 alpha. well, ऐसा क्यों हुआ कि अपन इसको दो अलग अलग तरह से लिख सकते हैं? secant square alpha you say. Maybe secant square alpha is related to tan alpha somehow. I mean, of course, what stands for alpha, but कुछ उससे better. Maybe it's related to tan 2 alpha somehow. Okay. Hey, what about that guy? Okay, no. Cot square नहीं काम ही नहीं करेगा वो. Then now what? Minus t square upon plus t square. That is all not good. Think. So cosine of 2 alpha की टर्म्स में अपन इसको लिख सकते थे, but that's just stupid actually. And you know कि tan 2 alpha, that's
tan 2 alpha times this thing. Uh, tan 2 alpha is just 2t upon 1 minus t squared, right? Okay. So tan 2 alpha into, let's say it's like 2 minus secant square alpha. That would just be 2 tan alpha, right? So 2 tan 2 alpha uh, equal to 2 tan alpha. What is this? It's plus secant square alpha tan 2 alpha. Hey, you got it. Secant square alpha tan alpha, sorry, tan 2 alpha. That can be written as 2 tan of 2 alpha minus 2 tan of alpha. Got it, man. Or in fact, yeah, 1 upon 2 में था anyway. So it's just tan of 2 alpha minus tan of alpha. That's what this thing actually is. Let's actually try it out. Let's see कि क्या ये सही में ऐसा होता है. So this would just be what, 2t upon 1 minus t square minus t, so 2t minus t plus t squared upon 1 minus t squared, and that is just t squared plus t upon 1 minus t squared, something like that, right? T squared plus t, yes. No, but how is that this thing? You're gonna have ये जो चीज़ है क्या है? It's just tan of 2 alpha, sorry, tan of alpha secant of 2 alpha, and यहाँ पे मुझे किसी secant of 2 alpha नहीं लिखना. It's gonna have 1 plus t. So that's how it should be, but oh sorry, it should be t cubed, because yeah, it's gonna be t cubed, और ये 2t रहेगा, it's just minus t and plus t cubed, so it's gonna be t cubed like that, right? Now it makes sense. It's just t upon 1 minus t squared into, actually yeah, so it's just t into 1 plus t squared upon 1 minus t squared. That's more like it. And this thing is of course a secant of 2 alpha. So yes, we can write this as tan 2 alpha minus tan alpha. ये तो बहुत लंबा था, मुझे लगा नहीं था इसको इतना सोचना पड़ेगा मुझे. So हाँ, फिर अपन इसको टेलीस्कोप कर सकते हैं. So it starts from n equal to 1. n equal to 1 till n. Come on यार. At least put r equal to 1. इतना क्यों करते हैं लोग? So r equal to 1 से start करने वाले हैं. You can see that. So it's going to be 1. और अल्फा अपन वापस पुट कर सकते हैं. What is alpha? It's just theta upon 2 power n. Right. Yeah, let's not do it. Let's call this thing as alpha sub r, if that makes it any better. So now this is just going to be what, like नहीं proper इसको मैं वैसे ही put करना चाहिए. Tan of theta upon 2 power n minus 1 minus tan of theta upon 2 power n. That's what this thing is. So start off with r equal to 1 or n equal to 1 if that's what they want. So tan of theta, because yes, minus tan of start of 1, right? So theta upon 2 power 1, this is 2 power 0, and then plus tan of theta upon 2 power 1 minus tan of theta 2 power 2, so on till you put n. So tan of theta upon 2 power n minus 1 minus tan of theta upon 2 power n. So the thing is, we cancel जाएगा सब कुछ. So just tan of theta minus tan theta upon 2 power n. That's what this thing is. So which of the following alternatives are correct? So tan of 2 pi, वो तो वैसे ही चला गया. Just 2 pi upon, oh, so 2 power 3. So 2 pi upon 2 power 3 is pi upon 4. So it is supposed to be positive 1. ये चीज positive 1 होगी, but यहाँ पे negative है, so negative 1. It works. Okay, let's keep going. Sub 4, तो फिर n 4 हो जाएगा. It's just upon 16, or it's like 4 pi upon, yeah. So tan of 4 pi, what is this? Yes, tan of 4 pi upon 3 minus tan of 4 pi upon 3 upon 16. So it's going to be pi upon 12. Ooh. So this is like pi plus pi upon 3. So it's going to be negative square root 3 because pi plus, sorry, positive square root 3 because tan and r. So square root 3 and then minus tan of pi upon 12. Well, fine.
pi upon 6, that's 1 upon 2, and that's equal to 2 tan pi upon 12, and then 1 plus t square, something like that. 1 plus t square, so it's gonna be like t square minus 4t plus 1 equal to 0. That just means t is minus b 4 plus minus 4, but v square 16 minus 4 is upon 2. That's supposed to be 2 plus minus square root of, so 4 गया है, 4 minus 1 square root of 3. There we go. And of course ये छोटा होना चाहिए tan of pi upon 6 say, which is 1 upon square root 3. So it's got to be 2 minus square root 3, right? So each is 2 minus square root 3. So it's basically square root 3 minus 2 minus square root 3 open 200, and that's going to be 2 square root 3 minus 2. So exactly, B is correct. F sub 5 of 4 pi. So 4 pi, tan 4 pi is gone, and then 4 pi upon 2 power, it's like 4 upon 32 pi upon 8. Wow, no thanks. Pi upon 8. So tan 45 degree, that's 1. तो अपने को खाना ढूंढना है, just 1 equal to 1 minus t squared upon t squared. In other words, 1 plus t squared equal to 1 minus t squared. So 2t squared equal to, no, wait, what? No, sorry, 1 equal to 2t upon 1 minus t squared. That's more like it. So 1 minus t squared equal to 2t. T squared plus 2t minus 1 equal to 0. So t is minus 2 plus minus 4. So b squared 4 minus 4 is plus 4 upon 2. That's going to be negative 1 plus minus. So 2 basically. But of course, what छोटा चाहिए अपने को, then that just means we use 1. And positive चाहिए first of all. So square root 2 minus 1. That is what tan of pi upon 8 is. Yeah, so square root 2 minus 1, but then actually negative of that thing. So 1 minus square root 2. So no, it's not this, it's incorrect. F sub 6 of 48 pi, well, tan of 48 pi is gone, and tan of 48 pi upon 2 power 6, which is 15, so 3 pi, that is also gone, I think, because no, 2 power 6, not 2 power 4, it's only 64, so 3 pi by 4, right? That's like pi minus pi by 4, so it's going to be negative 1. Negative of negative 1, because they have a negative 1. So positive 1. So D is also correct. 64. 64 is let f of x be equal, okay, f of x minus f dash of x equal to e power negative x f of x square, where f of 0 is 1 upon 2, x belongs to negative 2 to infinity. The following is correct. What? Okay, तो तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया बेसिकली, ठीक है, y minus y dash equal to e power negative x into y squared basically. Yeah, so okay, अब मैं क्या करूँ इसका? Oh, I think I know. E power negative x, काम करूँ इसको y यहाँ पे ले, e power x into 1 upon y minus e power x into 1 upon y squared y dash, that's equal to 0. It's definitely just the derivative of what? E power x upon y. So this thing has to be a constant because derivative is 0. Yeah. And that just means y is some constant times e power negative x. That's what it actually means. And of course, initial conditions, f of 0 is 1 upon 2. So that just means k is 1 upon 2. So y is 1 upon 2 e power negative x. That's what this thing is. And it's only for x bigger than minus 2, less than infinity. Which is following sort. Least value of f of x is 1 upon e. Well, first of all, e is still decreasing, huh? Then for least value, you just want infinity basically, right? So something e power negative infinity is supposed to be 0, right? So no, least value is 0. Yeah, I think that's okay. Why shouldn't that be correct? It's not be correct, right? Okay, greatest value of f is e. Greatest value will be when it's x is lowest. So negative 2 put karo usme. That's half of e power negative 2. That's not correct. F of x equal to x has 2 solutions. No idea. It has 2 solutions. Huh? Okay.
2 पे क्या है, e power negative 2 upon 2 which is, and x f of x equal to x, x equal to negative 2 पे क्या है, it is negative and this thing is positive, and maybe it does have actually two solutions because look, ये चीज पॉजिटिव है काइंड ऑफ, राइट, आई मीन ओके, जीरो पे ये चीज जीरो हो जाती है और इसी से अपन x और नेगेटिव करते हैं तो ये इंक्रीज होता है, तो लाइक दिस, और x इक्वल टू, sorry, y equal to x is like that. So इसका नहीं यार, इसका एक ही solution है, just has one solution in fact. So B is just wrong, C is wrong, A is wrong, f of x is a 1 function, yeah, of course. So D is correct because yeah, 64 का D, only D. Man, this is weird. Why is it that? But ऐसे ही तो हो रहा है यार, और कुछ, it's just how it is. ठीक है, क्या कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन में सिर्फ डी करेक्ट आया और क्यू, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? 65. So the following trigonometric ratios can be equal to this, seriously. So log base 0.5 of, wait, what is this? 0.5 recurring maybe? Is this 0.5 recurring? No, please don't put it as 0.5 recurring. It is 0.5. Okay, recurring. Shit. So this is what, 5 upon 9 because 1 upon 9 is 0.111 and that is 5, 0.5555. Yeah, so 0, yeah, it's just 5 upon 9. Okay. Right, तो अपन क्या देख रहे हैं, log base 5 upon 9 और ये सारी चीज कोई अच्छे सेंसिबल बेस पे शिफ्ट करना पड़ेगा. 1.8 is 9 upon 2 anyway. I think log base 3 अच्छा रहेगा, right? Log base, या फिर natural log भी convert कर लो directly. So it's gonna be natural log of 9 upon 2 है, right? So natural log 9 minus natural log 2 upon natural log 5 minus natural log 9. ये तो पहला रहेगा, उसके बाद प्लस log base ये सारी चीज, it's just 1 upon that and stuff. So natural log 5 minus natural log 9 upon natural log 9 minus natural log 2. अपने को ये वैल्यू ढूंढनी है. Well, first of all, वैल्यू नहीं भी ढूंढनी, you just know कि like 0.5 recurring and 1.8. या ये जो चीज रहेगी 5 जो है वो 9 से छोटा है, then that means natural log 5 is less than natural log 9. So ये जो नीचे की चीज है वो नेगेटिव है, ऊपर की चीज पॉजिटिव है. What that means is this thing is negative and this thing is also negative. तो reciprocal basically. Then yeah, this thing is just bigger than negative 2. Sorry, smaller than negative 2 because arithmetic geometric inequality. So क्या क्या इसके इक्वल हो सकता है? by any chance? Cot theta maybe, cosine theta no, cosec theta हो सकता है, yes, sec theta हो सकता है. So I'm gonna go for A, D and C. So A, C, D. Right, next. 66. F from real to real satisfies this thing where f is non-identically 0 everywhere. F of x cannot be. So satisfies mod of f of x minus mod of f of y equal to f of x minus 2x squared f of y plus f of y squared. तो ये क्या सारे x और y के लिए ट्रू है, मतलब डोमेन तो पूरे रियल नंबर्स से. ओके, नॉट आइडेंटिकली जीरो एवरीवेयर. ओके, सो इट्स नॉट अ जीरो फंक्शन. So this is true for all xy values. So it's also true for when x is equal to y. That just means ki 0 equal to f of x minus 2x square f of x plus f of x square. No, not the best thing to do.
बट नहीं यार. Okay, no, that's actually equal to f of 0. Okay, f of 0 अपने को ढूंढना पड़ेगा इसकी तरह से. Let's put x equal to y equal to 0. Then this would definitely be f of 0 equal to f of 0 uh, minus 2. Okay, वो तो चला गया क्योंकि x 0 था तो yeah. Oh, you could just put x equal to 0 to kill this term basically. और फिर हो जाएगा plus f of 0. So all we are seeing is just that f of 0 is 0. Hmm. Okay. F of 0 is 0, but other than that, what do we know about it? Nothing. Okay, let's set x equal to y. Then हो जाएगा f of 0 is equal to. Let's set x equal to 0 and नहीं वो गलत होगा. What about x equal to f of 0? तो यहाँ पे f of 0 का स्क्वायर वगैरह आएगा and yeah f of 0 जाएगा यहाँ पे. Right. The thing we know is कि x equal to 0 सेट करने पे ये चीज चल जाती है और ये चीज चली जाती है. So it just leaves us with f of y squared. So f of y squared is just f of 0 minus f of y. But वो mod में है anyway, so f of y minus f of x can't hurt, right? Yeah. Yeah, come on. But यहाँ पे डबल f. अगर अपन f of 0 equal to 0 नहीं प्रूव करते, then this just becomes very hectic. How do you prove that f of 0 is equal to 0? You did prove कि f of 0 is equal to 0, but other than that, you don't know how to do it. Let's set y equal to f of no, don't do it. Okay, क्या कर अगर suppose अपन ने y equal to 0 put कर दिया, then what will happen? It just becomes f of x minus. Hey, wait a second. Okay, so अपने को एक चीज तो पता है कि f of 0 is just 0. So when you put x equal to 0, that just leaves us with f of y minus f of 0 का mod, of course. That thing is just equal to तो ये तो गया, ये तो मर गया, ये भी मर गया. It's just f of y squared. So yeah. And when you put y equal to 0, it just leaves us with same stuff, f of. Oh, so you could just change x and y and this would work, but no. Just change करना काफी नहीं है. What you should in fact do is that you should put specific values and that would make sense. So basically मैं अभी कर रहा हूँ. So y equal to 0 put करूँगा. And that means f of mod of f of what x minus f of 0, जो भी ये चीज होती होगी, that's equal to तो f of x minus 2x squared times f of y, but f of y is just f of 0. So yeah, f of x minus 2x square f of 0. Hey, you know what I'm thinking? अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे x यूज करता as a variable, then of course it just means कि f of x is minus 2x square f of 0. That thing is just f of x square for all x belong to real. Yeah, that makes perfect sense. तो इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? Let's set x equal to 0. Of course, why not? Let's set x equal to 0. ये तो गया, ये भी गया. f of 0 is 0. Okay, that's some new information. So we know कि f of 0 is also 0. Okay, that's nice. Oh yeah, we can do this now. So look at that, huh? Okay, thinking of something. So let's set x equal to y. तो ये चीज तो 0 हो जाएगी एंड यहाँ पे सिर्फ आएगा f of x minus 2x square f of x plus f. hey, वो तो exactly ये चीज थी, तो फिर yeah, it's the same thing. No, but अपन ने यहाँ पे 0 सेट नहीं किया, तो फिर ये actually ज़्यादा जनरल नहीं हो जाएगा because it's going to be f of x and f of x squared. राइट, तो क्या इक्वेशन मिल रहा है अपने को? वी जस्ट गेट कि f of x
for any general x minus 2x square f of x, not 2x for f of 0, okay, plus f of x square, that is equal to 0. Okay, but you also know that f of x is just 2x square f of 0. Actually, no, f of x plus f of x square, that is just this thing, right? It's no, this is not correct. What it's saying is key 2x square f of x, this for any general x is the same thing as, no, how can, there's no such function. F of x is not identically 0 everywhere, right? Then that, how can this even be? But clearly अगर अपन x और y equal put करते हैं, then this just becomes 0, and then f of 0, that's also 0. So 0 is equal to f of x minus 2x square f of x plus f of x square. बट फिर अपन ने यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जमा की थी उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, ये दिखा रहा है कि f of 0 should be f of x, and that's not cool. It's not. Oh, sorry. यहाँ पे ये पॉजिटिव में है, यहाँ पे ये नेगेटिव में आ जाएगा because right. So no, it's not that big a deal actually. Okay. So at least आपको ये बताया कि f of x क्या है. So we can deal with that, right? So you can say कि this is just 2x square f of 0 and minus f of x square, sorry, plus f of x square. So that just becomes 2f of x square plus 2x square into f of 0 minus 2x square into f of x, that is equal to 0. So that just means f of x square is, hey, f of 0, guess what, that's okay, that's gone. F of x is just f of x square. Cool. So this thing is just f of x square, and that definitely just means f of x square is equal to x square times f of x. Wait, what? F of x square is, wow, x squared times f of x. This is weird. That's just the way it is though. Okay, nice. Now what? So ये कुछ नया आ गया, and you of course f of x is equal to f of x square. So basically f of x is x squared times f of x. It's getting more and more complicated than that, right? Yeah. बट फिर ये जो चीज़ है ये इन जनरल एक्स और वाई के लिए ट्रू है. सो ये एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है, तुम्हें ये एक चीज़ याद रखनी है, राइट, और तुम्हें ये भी चीज़ें तो याद रखनी है. अब अपन इन सब इक्वेशंस को यूज करके फाइनली ये फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं होपफुली. या लेट्स डील विद इट. क्योंकि अपने पास में बहुत सारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो मे बी कैन सॉल्व दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, this goes for any general xy, right? So f of mod of f of x minus f of y is equal to, just simplifying this, okay? F of x, that thing is basically just f of x squared, right? Minus 2x square f of y. So nothing to solve over here. So 2x square f of y. And then f of y squared, which is also just plus y squared f of y. Oh, and by the way, f of x squared is just x squared f of y anyway. Yeah. Okay, that's very nice. Oh, this is getting cancelled. Just negative x squared f of y. काफी बेटर है पहले से. तो वेट, क्या ये y था कि कुछ और था? x square f of x होना चाहिए था. Then okay, it's slightly different. Okay, that's one equation that you know now for sure. But still, इसमें अपन इसको एज अ फंक्शन नहीं ट्रीट कर पा रहे. So some other thing that we can maybe try out. और यहाँ पे still mod है and everything, and it's not good. It's not good. No. I don't like this mod over here. अगर मैं वापस x equal to मुझे 0 पुट करना पड़ेगा, but that just kills everything. So no.
I don't know यार, ये बहुत अजीब है. In both cases अपन ने क्या क्या पुट किया था, x equal to 0 and y equal to 0. हमने कभी भी सिंगल x equal to 0 नहीं पुट किया था, did we? No, we didn't. Wait a second. अगर मैं y equal to 0 पुट करता हूँ, let's say, then this is gone, this thing is gone, so f of mod of f of x is equal to f of x plus what, f of y squared, right? But okay, वो तो गया anyway. Then what that means, and this is for any value of x, right? तो f of x अगर नेगेटिव है, then that means कि ये जो चीज रहेगी, it will always give the same thing, right? Either f of x always just gives positive values, that's what they mean, और अगर वो नेगेटिव values दे रहा है, then ये basically even function है. That's I think what they are saying. Okay. Still यार थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि ये आइडेंटिटीज अपने को फुल पिक्चर नहीं दिखा रही है, अपने को कोई फंक्शन क्या है ये पता नहीं है ना. I'm thinking कि maybe ये increasing function है, but I don't know. But at least you know कि f of mod of f of x is now just f of x. Okay. यार ये कब होता है? It just happens when f of x has to be positive, or f is an even function. Can f be an even function though? It actually does have to be, because f of x is just f of x squared upon x squared, so it is by default an even function. तो मैं अगर x equal to 1 पुट करोगे तो सेम चीज मिल रही है, तो f equal to -1 पुट करोगे तो सेम चीज मिल रही है. So it just has to work like that. Oh, that is super nice actually. तो ये एक even function है, that's what we know. And that means कि तुम directly f of x minus f of y use कर सकते हो and not worry about ये positive की negative है, right? And then it also makes sense कि f of 0 should be 0 because it's an even function. तो नहीं, actually नहीं, it doesn't necessarily, it doesn't need to be, but it's a nice thing. तो हाँ, you can just write this as f of x minus f of y is equal to all that stuff. So equal to ये सारी चीज, right? Instead of using the mod, तुम directly ऐसे लिख सकते हो this case. Oh, this is actually very nice because yeah. Now think about it. इसके आगे क्या कर सकता हूँ? यार ये बहुत अजीब नहीं है क्या? Because f of x is f of x square, at the same time it's also x square f of x. ये तो ऐसे लिख ही देते हैं f of x. Yeah, look, मुझे फंक्शनल इक्वेशन जनरली सॉल्व करने की आदत नहीं है, क्योंकि ये 2 साल में मैंने फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व नहीं किया. हट यार, ये क्यों? This also equal to x square f of x. This is for all real values of x, huh? So yeah, I mean ये चीज तो अपन रेयरली यूज करने वाले, बट ये चीज ये काफी यूजफुल है. Hey, you know what I'm thinking? कि अगर ये ऐसा है, just take a derivative of this thing actually. So it just means कि f dash of x square times 2x that is equal to, क्योंकि सारी x की वैल्यूज के लिए ट्रू है, then it has to be कि डेरिवेटिव भी सही होगा सिर्फ, unless वो of course continuous नहीं कुछ points पे, then that makes a problem. And then it's just f dash of x, and this is true for all values of x, not necessarily 0. तो जब x 0 नहीं है, then we can just cancel this away. Oh, yeah, this is true for all values of x. But now if you remember f, okay, this is actually f dash, not f. That will be different. Okay, so f dash of x square times 2 is equal to 2 times of f of x plus x f dash of x. It's an even function and stuff. Okay, no, not making sense. It's not making any sense.
f cannot be 1 1 or 2 monotonic. Well, first of all, अपन ने prove तो कर दिया है कि f has to be an even function by using this identity. And what that actually means is कि नहीं, it cannot be 1 1. Definitely not. Can it be on to maybe? Can it be monotonic? No. If it's monotonic, then it cannot be even. But it is in fact even. So this is just not correct. Many one, well, it definitely can be. So A and C is the way to go. And still on 2 it can be on 2, there's no problem with that, right? So yeah, I think it works out. Hey, yeah, right. तो एक्चुअली अपने को पूरा फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व नहीं करना था, अपने को सिर्फ ये दिखाना था कि प्रॉपर्टी उसकी है वैसी कि वो मेनी वन फंक्शन बन सकता है. देन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The value of x satisfying the equation on natural log of tan of x equal to 0 is r. Okay, value of x satisfying this equation. So natural log of tan of x equals. So this means that tan of x is 1. Seriously, why did you put this equation? So x is just n pi plus pi by 4. What was this? So yeah, it's pi by 4. It's going to be negative 3 pi by 4. Pi plus pi by 4 is 5 pi by 4. Then once again pi, so 9 pi by 4. So ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा. Negative 7 pi by 4, yes, it also works. So negative 2 pi plus pi by 4. So A, B, C, D, all of them. 67, 68. A tangent drawn from the point something touches it at a point A in the first quadrant. The coordinates of another point B on the circle are such that the length of AB is 4. So एक सर्कल है, x2 plus y2 equal to 8. A tangent drawn on the point 4, 0. First of all, वो सर्कल में नहीं बैठता, वो सर्कल के अंदर है. So like this. Yeah, मतलब ये 8 होगा, that's 4 like that. Okay, तो इसका क्या? Tangent drawn from the point. Wait, what? Sorry, 16. Sorry. It's gonna be 2 square root 2 like that, and this should be actually further away. Sorry. Yeah, so tangent drawn from this to this circle. Okay, it touches at points at a point A in the first quadrant. So ये point A है. The coordinates of another point B on the circle such that AB is equal to what? Is that length of AB is 4? Huh? Why is that? Okay, length of AB is 4. Seriously, ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं, तो क्या क्या पूछ रहे हो कि तुम A ढूंढो और फिर B ढूंढो? क्यों? कितना घटिया क्वेश्चन है ये. Length of AB is equal to 4. Oh, come on, seriously. Just have to find what A is, otherwise तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है यार, करो. So क्या था ये x plus y is equal to 8. So let's say कि इसका parameterization है 2 square root 2 cosine theta 2 square root 2 sin theta. This becomes 2 square root 2 and all that stuff. So x cosine theta plus y sin theta equal to 2 square root 2. That is what the tangent is, and then it lies like 4, 0 is on this thing. So that just means कि 4 cosine theta equal to 2 square root 2. So cosine theta has to be 1 upon square root 2. Then that means theta is supposed to be pi by 4 because first quadrant. So yeah, this is pi by 4, like this angle is pi by 4. Okay, cool, nice. Next what? और फिर अपने को किसी दो पॉइंट्स ऐसा कैसा, ठीक है ना यार, इसके कोऑर्डिनेट्स समझ के अपन निकाल सकते हैं, बट दैट्स नॉट द बेस्ट थिंग टू डू. लेंथ ऑफ ए बी इज 4. ओके, ऐसा अपने को एक पॉइंट ढूंढना है बी. but अभी ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 2 square root 2. Okay, and we want the length to be 4, basically this length. Not important कि ये length हो, जरूरी नहीं है. So something like this, huh? This like this. In fact नहीं, अगर pi by 4 है then you can actually do this thing. So 2 square root 2 into 1 upon square root 2. It's gonna be 2, 2 basically. So 2, 2 is that point, and right, अपने को एक और दूसरा point ढूंढना है
जिसका डिस्टेंस अपने निकाल सकते, सो जस्ट 2 स्क्वायर रूट 2 कोसाइन थीटा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा माइनस 2 का स्क्वायर, ये जो चीज़ रहेगी दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर व्हिच इज 16. It's gonna have 4 over there anyway, so it's square root 2. So 2 cosine squared minus 2 square root 2 cosine plus 1, and then 2 sine squared minus 2 square root 2 sine plus 1, that is equal to, so 4 4 चला गया, right. So यहाँ पे क्या सिर्फ 4 बचेगा ना, it's gonna be equal to 2 like that, and then cosine plus sine squared is 1 1 minus square root 2 into cosine plus sine, that is 2 basically. No, not 2 anymore, it's just 1. So ये तो गया. Oh wait, what? Yeah, just gaya. So sine equal to negative cosine tan of theta, so naya apna rahega, that is equal to negative 1. Yeah, so it can be negative pi by 4 and pi minus pi by 4. So ये यहाँ पे हो सकता है या फिर ये यहाँ पे हो सकता है, ये दो पॉइंट्स अपने को मिल जाएंगे, right. So this symmetric, of course, it's just 2 comma negative 2 and negative 2 comma 2. Okay, so A and B. 69th. A boy has a collection of blue and green marbles. A boy has a collection of blue and green marbles. The number of blue marbles belong to the set 2, 3, 4. Okay. If two marbles are chosen simultaneously and at random from the collection, the probability that they have different colors is 1 upon 2. Possible number of blue marbles is. So, blue and green marbles, blue marbles का जो number है, how many of them, that belongs to this set. दो मार्बल्स साइमल्टेनियसली को चूज करना है रैंडम कलेक्शन से, ओके. प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव डिफरेंट कलर्स, तो ग्रीन मार्बल्स कितने हैं वी डोंट नो एक्चुअली, ओके. पॉसिबल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज दिस इज बैड. सो लेट्स से उसके पास में बी ब्लू मार्बल्स है और जी ग्रीन मार्बल्स है, देन व्हाट यू वांट इज दैट दे हैव डिफरेंट कलर्स. सो पहला ब्लू और दूसरा ग्रीन, फॉर दैट इट्स गोइंग टू बी ब्लू अपॉन जी प्लस बी एंड g upon g plus b minus 1 because blue में से चला गया, okay. And then plus उल्टी चीज की दूसरा ग्रीन, सॉरी दूसरा ब्लू और पहला ग्रीन, just g upon g plus b and then b upon g plus b minus 1, and this probability that has to be equal to what is 1 upon 2, then that just means कि 4gb, यहाँ पे g और b बस natural numbers हैं, yeah, in fact natural भी नहीं, whole numbers हैं, then this is just g plus b into g plus b minus 1. Isn't that right? So this is just g squared plus 2gb plus b squared minus g minus b. So g squared plus b, so actually यहाँ पे minus 2 भी आने वाला है, so just g minus b का square is equal to g plus b. That's what this thing is actually saying. So yeah, g minus b का square that is equal to g plus b, and of course जो blue marbles है those belong to this set. तो ग्रीन इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, ओके. Probability that they have different, okay, possible number of blue marbles is let's say 2, 3, 4 all the way till 13 है, right? तो इसमें सारे वही नंबर्स हैं. अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटी है अपने को क्या कंसिडर करके करनी है कि तुम्हें जो ग्रीन और ब्लू है वो पता रहेंगे, काइंड ऑफ लाइक दैट, कि तुम्हें ग्रीन पता नहीं है और तुम्हें पता है कि ब्लू इस सेट में से है, देन द प्रोबेबिलिटी, ऐसा कुछ, कि तुम्हें एक्चुअल स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी दिखनी है. स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में कुछ भी हो सकता है, ग्रीन और ब्लू, राइट? तो वेट अ सेकंड, नो, ये प्रोबेबिलिटी है कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे तो हज़ारों डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, राइट? सो 2 के लिए अलग अलग टाइप के ग्रीन आएंगे और 3 के लिए अलग अलग टाइप की ग्रीन वैल्यूज आएंगे, और ये तो चलते जाएगा यार. दिस इज जस्ट बैड.
that probability is literally 1 upon 2. So तुम्हें statistical, oh no, then this is not going to work. तो फिर ये 1 upon 2 नहीं होना चाहिए था, और should it have? No. मैं अपने को सारी प्रोबेबिलिटीज कंबाइन करके देखनी चाहिए थी उस टाइप से, तो बट वो तो यार इम्पॉसिबल है। वो कैसे तुम एक्चुअल में एग्जाम टाइप कर सकते हो कि उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज रहेगी ग्रीन के लिए, मतलब पॉसिबिलिटीज ग्रीन के लिए। तो या दिस डजंट मेक सेंस। कितने भी ग्रीन मार सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ब्लू इज रियली टाइनी फैक्ट कि ग्रीन अगर लाइक 1000 वगैरह तक जाएगी तो ऐसा हजारों केसेस रहेंगे जिसमें तुम मोस्ट ऑफ द टाइम तुम ग्रीन ही कर रहे हो, क्योंकि वो जो केसेस है उसमें ग्रीन के नंबर इन्फिनिट तक टेंड कर रहे हैं, और ऐसे जो नंबर ऑफ केसेस है वो इन्फिनिट तक टेंड हो रहे हैं, तो फिर इनफैक्ट ये प्रोबेबिलिटी तो जीरो अप्रोच कर जाएगी। बट दैट्स नॉट हैपनिंग, सो आई थिंक व्हाट दे मीन इज दिस केस ओनली। ओके, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज ओके। तो कैसे करेंगे हम इसको? वेल, green squared, okay, green minus blue plus square equal to green plus blue plus square, right? Let's say green minus blue is x, then this is what x square, जहाँ पे x obviously, okay, so what we do, x goes from, so maximum value क्या हो सकती है, maximum नहीं, इनफैक्ट मिनिमम क्या हो सकती है, जब green 0 हो और blue जो भी blue होता है वो हो, which goes till what, -13 I think, and yeah, but उसका square करना है anyway, so don't actually have to worry about it. All you need to know is that it's just some kind of integer. So okay, x square is equal to green plus blue, so x plus 2 blue. In other words, x into x minus 1 is equal to 2 times blue. Of course, b should not be an odd number because, oh sorry, b should not be an even number. Odd number चलेगा। थिंग इज कि x और x माइनस 1 इनसे कोई ना कोई एक तो इवन होगा और एक ऑड होगा, तो नहीं यार, ओके ओके ओके, चल सकता है कि अगर b ऑड नंबर हो तो भी चलेगा, बिकॉज हो सकता है कि x 4 का मल्टीपल हो, x माइनस 1 4 का मल्टीपल हो, देन एक्चुअली डज मेक सेंस। या थिंग इज कि b कैन ओनली बिलोंग in this range, so 2 to 13, तो अगर b2 है फॉर एग्जांपल, इसका भी 4, तो उसके लिए x और x minus 1 की दो वैल्यूज आएगा एंड सो ऑन। दिस इज जस्ट सो बैड, so green minus blue and seriously no, नेगेटिव नंबर से मुझे डील नहीं करना है। पॉसिबल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज so many different things, you know. Can it be 6? अगर वो 12 है then that just means कि you could just have what 4 and 3 works, right? Let x be equal to 4, x minus 1 be equal to 3. अगर x 4 है then that just means कि green marbles कितने थे, blue plus 4, so 6 plus 4 10, yeah, cool. Can it be 3? So अगर ये 6 है then you can add as 3 and 2, of course it's working. Can it be 2? 4 cannot be written as a product of positive integers, so no, actually no, 4 it won't work. So a doesn't work, okay. अगर 10 है तो फिर 20 can be written as 5 and 4, so that also works out. तो हाँ ना, ठीक है, ये 3 6 10 चल सकते हैं, just a नहीं चलेगा, right? Then that's it, BCD 70. is if AB equal to A and BA equal to B, then क्या है, क्या A B B A? I'm assuming ये मैट्रिसेस है, बट मैं ऐसा बोलना तो चाहिए कि मैट्रिसेस है ये, ठीक है। AB is equal to A and BA equal to B, then A squared be equal to A squared. I mean, of course, just multiply by A on both sides. So, I mean, apply A on both sides. Multiplying both the matrices. B squared A equal to B squared. I mean, yes, of course.
ए बी ए इक्वल टू ए बी फिर ए तुमने लगाया तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. एंड डू यू नो व्हाट ए स्क्वायर इज एक्चुअली? नो यू डोंट. Maybe you do actually. Let's figure it out. Hmm. Well, yeah, A into B minus 1, or sorry, B minus identity matrix. That is 0, right? It's a 0 matrix. Okay, so determinant अगर मैं देखूँ, then that just means determinant of A is 0 or determinant of B minus identity matrix is 0. Okay, ये तो बहुत सारे possibilities हो सकते हैं. Okay, yeah, that's not the way to go. Okay. Let's do this thing. So BA, you know, अगर मैं A multiply करूँ, so BAB equal to BA, but then of course BA is just B. But you know कि AB is just A, so that's BA once again. ये तो बहुत circular हो जाएगा. No, that's not good. Okay, wait, what? You know कि BA is also. Wait a second. What is this? BA, फिर मैंने B लगाया, then it's just B squared. Oh, come on, that's not supposed to be. This is a B square, sorry. And AB is A, so it's actually like BA equal to B square. But you know, BA is just B, so B equal to B square. Did I miss something? No, it seems legit. BA is in fact B square. Just multiply B on both sides, and then BAB equal to B square. But guess what? Wait, in fact, no. You can just use this thing. No, okay, that's not the best. Yeah, BAB is equal to B square, but then the thing is the BAB can be written as B times of AB, but AB is just A, so it's BA. Yeah, that makes sense. So, same stuff. यहाँ पे B, so BA is just B, but then AB that is A, so it is in fact equal to A, and this is also very correct. So both are also correct. Okay, so A, B, C, D. 70 done. Okay, let's stop here. So I'll see you in the next video.